that's always one or two video uploaded daily on PALAVA TV, where a Palavian is helping many Palavians through some or the other teaching or learning. That is because you have not yet subscribed to the channel. And if you have subscribed to the channel but you are still not getting this information, it's because you have missed out on one very small but a very important and significant step. So let's see how to do that. First of all, if you have not subscribed, please hit this subscribe button here. Please note, as soon as you hit the subscribe button, there is a bell icon generated over here. Is click the bell icon and turn it. Unless you do the notification bell icon all settings, you are not going to get the daily updates. That's it. Get all the live updates so that you can enjoy the live program at the same time. Please notice there is another new join button over here. This button is for the PALAVA TV membership program, wherein you can enjoy bonus contents. So we click on this join and you will see the various information on the page where you can enjoy exclusive and bonus content. Thank you. Okay. Good evening, everyone. Yes. Let's lecture. In our last lecture, we had started with the law of demand. Can you tell me what does the law of demand state? Any one of you can unmute and answer. What does the law of demand state? Anyone? When the demand rises, Yeah, unmute yourself. sorry. When the price rises, the demand falls. Good. When the price rises, demand falls, and when the price falls, demand rises. So this is a direct relationship or an inverse relationship. When price rises, demand falls, and price falls, demand rises. So this is a direct relationship or an inverse relationship. Inverse. You can write your answers in a chat also. That is also absolutely. Inverse. Yes. Yeah, I have received one answer in the chat. Exact. The answer is the relation between price and demand is inverse. Now, in our last lecture, we have studied about the schedule. Schedule is nothing but the table. Then we have also studied about our assumptions. We have studied about the diagram. और हम लोगों ने एक exception study किया था. The most important exception of Gibbon's paradox. The law of demand states that price rises, demand falls, and price falls, demand rises. Exceptions are the conditions where the law is not applied, and hence, in case of exceptions, whenever price rises, demand rises, and whenever price falls, demand falls. Exceptions are the conditions where the law is not applied. Now, हम लोगों ने last lecture में exception study किया था. The first and the most important exception that we had studied was Gibbon's paradox. Now, Sir Robert Gibbon had found a very unique behavior among the poor people. He had seen that in case of poor people, they consume cheap bread, cheap butter, cheap potatoes, cheap tomatoes. In short, they consume the ingredient.
inferior quality goods. And hence, Robert Gibbon had found that in case of inferior goods, whenever the price falls, the demand also falls. I repeat, Sir Robert Gibbon had seen that whenever price falls, demand also falls. ये सिर्फ और सिर्फ गिब्बन्स पैराडॉक्स में प्राइस फॉल को ही स्टडी करना है. गलती से भी अगर आपने प्राइस राइज लिखा तो ये रॉन्ग होगा. हमने उसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल किया था ऑफ रेशन राइस एंड सुपीरियर राइस, एंड वी हैड प्रूव्ड दैट व्हेनेवर प्राइस फॉल्स द डिमांड आल्सो फॉल्स. द नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, but as far as Gibbon's paradox is concerned, it slopes upwards from left to right. क्योंकि ये inverse है, क्योंकि ये direct है, the demand curve will slope upwards from left to right. Now we have studied about the first exception to the law. Today we are going to study the next exception to the law. Now the second exception to the law is fashion. Now, as we had seen in the chapter Law of DMU, यहाँ पर भी आपके generally assumptions पर ही आपके exceptions base हो सकते हैं. Like, if you remember, there was one determinant of demand, fashion. The moment a commodity comes in fashion, the demand for the commodity goes up. I repeat, the moment a commodity comes in fashion, the demand for the commodity goes up. And the moment commodity goes out of fashion, the demand comes down. जब भी commodity fashion में आती है, what happens to the price of the product? Whenever a commodity is in fashion, what happens to the price of the product? Price is high. See, the commodity is in fashion. Ripped jeans, the price is high. Now, people will demand more or less. Ripped jeans का फैशन है, प्राइस हाई है, तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे या कम करेंगे. You can unmute yourself and answer, or you can put your answer in a chat. Yes, Anushka, you are right. People are going to increase their demand. Because the commodity is in fashion, even if the price is high, the moment it goes out of fashion, then अभी समझ लो, जैसे फ्लोरोसेंट कलर्स का बहुत फैशन था, लोग उसका टी शर्ट, उसके बैग, उसके शूज, उसके हेयर बैंड्स क्या पहनते थे. आज उस प्रोडक्ट का फैशन नहीं है, उस कलर्स का फैशन नहीं है. सो टुडे इमेजिन इफ यू गो टू बाय अ बैग एंड सेलर बोलता है भाई ये फ्लोरोसेंट वाला ले लो, मैं आपको एकदम सस्ते में दे रहा हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके आपको, फ्लोरोसेंट कलर्स आर नॉट बीन यूज्ड, assume that now because the price is less, आप फ्लोरोसेंट बैग खरीदोगे या नहीं खरीदोगे. The commodity is out of fashion today, no one is buying them, hence the seller is selling it to you at a cheaper rate. Are you going to demand it or no? Answer. No. आ गया आंसर. Very good. नहीं खरीदेंगे. Very right. हम बिल्कुल भी डिमांड को नहीं खरीदेंगे. यानी यहाँ पर even if the price is less, the demand is also less. जैसे ही कोई कमोडिटी फैशन से निकल जाती है, सस्ती होने के बावजूद people are not going to demand it. The next is snob appeal, snobbish items. Now, when I talk about snob appeal, these are the prestigious goods. Like say for example, diamond. Diamonds as such हमारे लिए बहुत यूज में नहीं है, हमने ये पहले के चैप्टर्स में भी देखा है. लेकिन डायमंड्स के साथ एक snobbish appeal है. More costly a diamond is, more is the demand for product. I repeat, डायमंड्स की जितनी ज्यादा प्राइस होगी, उसके साथ उतनी ज्यादा स्नॉबिश अपील होती है एंड लोग उतना ही ज्यादा डायमंड्स का डिमांड करते हैं. Higher the price, higher the demand. Say for example, cars. A
car has a prestige issue attached to it. And इसीलिए कई बार जब cars की prices high होती है, people are willing to buy because they can showcase their richness. And hence, if the price is less, the demand is less. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज द नैनो कार। जब नैनो कार मार्केट में आई थी तो लिटरली ऐसा लगा था कि नाउ द एंटायर मार्केट वुड बी फ्लडेड विद नैनो कार। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि 1 लाख रुपए में भी कार मिल सकती है। अगर आपने सचमुच उस कार को कभी देखा हो तो इट वॉज अ वेरी नाइस कार। अंदर काफी स्पेशियस था, सिंस द कार वॉज कॉम्पैक्ट, वो कहीं पर भी आसानी से आप लेकर जा सकते थे। कार कॉम्पैक्ट थी तो उसका एसी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एज आई ऑलरेडी सेड, इट वाज स्पेशियस। 1 लाख रुपीस में कोई सोच नहीं सकता था, एंड टाटा की ये देन है कि ये नैनो कार है। यू नो, सब जगह पर इसका ये हो रहा था, अरे इतनी सस्ती कार, इतनी सस्ती कार। इवन मेनी फॉरेन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स हैड आल्सो, दे वर सरप्राइज्ड कि इतने सस्ते में टाटा ने कैसे कार बनाई। नाउ सोचा गया था हर एक के पास ये कार होगी, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर फ्यू डेज इट वाज सीन दैट people were not buying the car. Did the car have any problem? The answer is no. कार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कार एब्सोल्युटली अच्छी थी। But the problem was car is a snobbish item, prestige is good. So when people own a car, they say, अरे हमारी कार है। लेकिन जब टाटा की कार आई तो उसके साथ there was no snob appeal at all. जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं, ओ आई हैव अ कार, लेकिन इन केस ऑफ टाटा ऐसा नहीं था। नो वन सेड मेरे पास नैनो है, किसी ने नहीं बोला था। स्नॉबिश आइटम है लेकिन सस्ते में था तो लोगों ने नहीं खरीदा। इवन इफ द प्राइस वाज लेस, अनफॉर्चुनेटली प्राइस कम होने के बावजूद द डिमांड वाज लेस। प्रेस्टीजियस गुड में अगर प्राइस हाई होती है तो फिर डिमांड हाई होता है। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। मेनी अ टाइम कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द मार्केट प्राइस। आप में से कितने लोग रेगुलरली मार्केट जाते हैं? यस, हाउ मेनी ऑफ यू रेगुलरली विजिट मार्केट? जाते थे, अभी अच्छा अभी तो नहीं, ऑब्वियसली लॉकडाउन पीरियड में नहीं है। इनफैक्ट हम लोग पलावा में रहते हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग को तो सारी चीजें घर पे ही मिल जाती है। बट अदरवाइज हाउ मेनी ऑफ यू यूज्ड टू गो टू मार्केट? मी यस, कभी कभी हम लोग जाते हैं, राइट। नाउ जब भी तुम मार्केट में जाते हो, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आपको मार्केट में देखकर सेलर समझ जाता है ये बंदा कभी कभार आने वाला है। सपोज मम्मी ने कहा कि जाओ आधा किलो टमाटर लेकर आओ। आप नाच नाच के खुद खुद के मार्केट में गए, टमाटोज बोला, आपने पूछा कैसे दिया, उसने बोला 10 रुपए का आधा किलो। आप उसको बोल के, अरे क्या 10 रुपए का आधा किलो, मैं हमेशा आप ही से लेके जाती हूँ और 6 रुपए में आधा किलो। सेलर बोलता है अच्छा चलो भाई तुम रोज के कस्टमर हो, लेकर जाओ 6। तुम नाच नाच के घर आते हो, देखा 10 रुपए आधा किलो की जो चीज थी तुम 6 रुपए में लेकर आए। लेकिन जैसे ही आप घर पर आते हो, अपने मम्मी को एकदम खुशी खुशी बोलते हो, देखा मैंने 10 की चीज 6 में की और वो भी येड़ा बनाया उसको। मम्मी बोलती है बेटा ये मार्केट में 4 रुपए आधा किलो मिल रहा है। क्या हुआ? प्राइस इज लेस। हमको मालूम नहीं था प्राइस क्या है, सॉरी प्राइस इज हाई। मार्केट प्राइस 4 रुपए थी, हमने 6 रुपए से खरीदी। हमको नहीं मालूम था कि वो सेलर ने हमको हाई प्राइस चार्ज की है। हम तो ये सोच के आए कि उसको क्या बेवकूफ बनाया, लेकिन उसने आपसे हाई प्राइस ली क्योंकि उसको पता था कस्टमर इग्नोरेंट है, उसको मार्केट प्राइसेस की खबर नहीं है, एंड हेंस ही चार्ज्ड यू अ हाई प्राइस। एंड इसने हाई प्राइस चार्ज करने के बावजूद आप खरीद कर लेकर आए उसे, राइट? सो इवन इफ द प्राइस वाज हाई यू डिमांडेड मोर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम मार्केट से आए, तुमने 6 रुपए आधा किलो लेकर आए, एंड मम्मी ने पूछा कैसे लाया बेटा, तुम बोलोगे 6 रुपए का था। और इतना सस्ता कैसे मिला? शिट यार 1 किलो तो लाना चाहिए था। शायद मार्केट रेट से तुम सस्ते में लाए, द प्राइस वाज लेस, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आपने जितना बोला था उतना ही लाया। प्राइस कम होने के बावजूद तुमने डिमांड को नहीं बढ़ाया, बिकॉज
कई बार कई कस्टमर्स में ये इल्यूशन होता है, उनको ऐसे लगता है कमोडिटी जितनी ज्यादा महंगी होगी उसका डिमांड उतना ज्यादा, सॉरी उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। आई रिपीट, इल्यूशन क्या कहता है, प्राइस हाई होगी तो क्वालिटी अच्छी, प्राइस कम हुई शायद तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। एक बार अगर सेलर को ये बात पता चल जाती, कई सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं एंड जनरली अपने घरों में डैडी लोग वैसे होते हैं, जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, जनरली डैडी लोगों को लगता है जितना महंगा होगा उतना उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो इवन इफ द प्राइस इज हाई दे फील दैट कि यस तो डिमांड मतलब क्वालिटी अच्छी होने वाली है। नाउ माय फादर इन लॉ इज वन अमंग देम, उनको हमेशा लगता है जितनी हाई प्राइस उतना बेस्ट क्वालिटी। इसीलिए जैसे जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग मी, हम जब मार्केट में जाते हैं वी ट्राई टू फाइंड आउट अ चीपर वर्जन, ही विल एंटर द मार्केट और पूरे मार्केट में वो एक चक्कर लगाते हैं और जो सबसे महंगा होगा वो वहां से लाते हैं। यानी हम मार्केट में सबसे सस्ता लेते हैं, वो सबसे महंगा। यानी अगर मुझे पता हो कि अगर वो किसी दिन मार्केट में गए और सब्जी ले रहे हैं और मैंने उनको फोन किया आप कहाँ हो, बोलेंगे मैं सब्जी ले रहा हूँ, मुझे पता होता है अपने पूरे मार्केट में सबसे महंगी सब्जी कहाँ मिलती है, वो वहीं पर नजर आएंगे। Why? Because he has an illusion that higher the price, better the quality. I remember जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, हम जब उसके लिए कपड़े लाते थे और उनको ऐसे दिखाते थे ये कपड़े खरीदे हैं, वो कभी भी कपड़े को हाथ लगाकर नहीं देखते थे, वो सीधा प्राइस टैग देखते थे। नॉर्मल घरों में शायद ऐसा होता है कि लोग महंगा लाते हैं और घर पे सस्ता लाते बताते हैं, हमारे घर में वो पहले आते ही प्राइस टैग देखते थे, अगर सस्ती चीज हो तो उसको फेंक देते थे, बोलते नहीं नहीं इतना सस्ता बच्चे को नहीं पहनने का। अगर प्राइस टैग महंगा वाला हो तो बोलते थे हाँ हाँ ये बहुत सही है ये पहनो बच्चे को। He was not concerned कि वो दिखता कैसे है, क्लोथ कैसे, he only had that illusion, higher the price better the quality, and hence जितनी बार सेलर ने ये समझा वो उसको उनको हाई प्राइस बता देते थे एंड कंज्यूमर डिमांड करता था। Hence many a time illusion also is an exception to the law. The next exception to the law is expectations about the changes in price. Now this is something you need to tell me. Suppose अगर मार्केट में प्राइस 10 रुपीज से 20 रुपीज हुई है, नाउ मार्केट में प्राइस राइज हुई है फ्रॉम 10 to 20, बट यू फियर दैट ये प्राइस आगे चल के 40 रुपीज होने वाली है। आई रिपीट, प्राइस 10 से 20 हो चुकी है, द प्राइस हैज गॉन अप फ्रॉम 10 to 20, but you fear that price will go to 40. You are expecting that. Hence, when the price is 20, price बढ़ी है, unmute yourself and you can answer. Price rises, demand will rise or fall. 10 से 20 प्राइस हुई है और तुमको लग रहा है कि 40 होने वाली है. So at 20 rupees you will demand more or you will demand less? Demand less. Very good. You will demand less. प्राइस राइज हुई है तो तुम कम डिमांड करोगे, यानी तुम वेट करोगे कि 40 रुपीज प्राइस होगी तो हम खरीदेंगे. Am I right? Think again about your answer. प्राइस 10 रुपीज से 20 हुई है, आपको लग रहा है कि ये प्राइस 40 होने वाली है. So at 20 rupees you will demand more or you will demand less? आंसर, हाँ मुझे चैट में आंसर एक आ चुका है. यस, यू विल डिमांड मोर. या सब आंसर्स आ गए चैट में. वेरी राइट. व्हेन द प्राइस राइजेस यू विल डिमांड मोर. ऑन द अदर हैंड, सपोज आज प्रोडक्ट की प्राइस इन द मार्केट इज 100 रुपीज एंड ये प्राइस कम होके 80 रुपीज हो गई है, यानी द प्राइस हैज फॉलन फ्रॉम 100 to 80. अब आपको लग रहा है यार इन अभी ना 2-3 दिनों में ये प्राइस समवेयर राउंड से 50 रुपीज होने
fallen from 100 to 80, but you are expecting that it will go to 50. So you will demand more or you will demand less. At 80 rupees, you will demand more or you will demand less. Very good, Aditi. At 80 rupees, you will demand less. Why? Because you will wait for the price to, yeah, everyone has answered right. All of you have answered right, rather. Yes, less. Why will you demand less at 80? Because you will wait for the price to go to 50 and only then you will demand. Is it clear? So when the price, whenever you have, now see 40 होगा कि नहीं, 50 होगा कि नहीं, ये आपकी expectation है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये price change हो सकती है. So this is just your expectation, right? The next is demonstration effect. Demonstration effect का मतलब है imitation effect. Many a times we do not have a commodity just because we need it. We buy a commodity because others have it. हमें शायद उस commodity की जरूरत ही नहीं है, but हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि बाकी सब लोगों के पास वो है. इसका best example is mobile phone. If I right now ask you, क्या आपको mobile phone की जरूरत है? Your answer will be yes. Can you tell me mobile phones की जरूरत क्यों है? Why do we need a mobile phone? Tell me. As a student बताओ क्या जरूरत है मोबाइल की? Why do we need mobile phones? You can put your answer in the chat. Easy life. To live a easy life. Simple. Yeah, so what ease does that mobile give you, right? It makes your life easy, but what ease does it give? You can put your answers in the chat also. Okay, over here it is written. Okay. So it is written over here that mobile phones is studying becomes easy. Okay. Or okay, you can contact parents, right? Or okay, in times of emergency, right? Or notes exchange कर सकते हैं, right? And okay, right, we can attend your lecture during lockdown. Wow, Pranav, that's nice. And to stay in touch with old friends, right, Anushka? Okay. Now remember, as far as education becomes easy because of mobile, believe me, when we did our education, that was also done without a mobile, and believe me, बहुत अच्छा education हुआ. हाँ, कई बच्चे बोलते हैं टाइम टेबल हमको पता चलता है. भाई हम लोगों ने भी कॉलेज क्लासेस अटेंड किए, हमें भी टाइम टेबल मिलता था, विदाउट मोबाइल थे, लेकिन अच्छा खासा एजुकेशन हुआ. हाँ, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं. ऐसी इमरजेंसी बच्चों आती ही कम है बहुत, राइट? और अगर सचमुच में कोई सीवियर इमरजेंसी आई ना, तो सबसे पहले अपने फोन्स बंद हो जाते हैं. एंड आजकल तो बहुत ही ज्यादा इश्यू हो जाता है फोन्स का. यस, वी कैन अटेंड योर लेक्चर ड्यूरिंग लॉकडाउन इज व्हाट प्रणव सेड. यस प्रणव, यू आर राइट. लेकिन बेटा, अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता ना, तब भी आप मम्मी पापा के मोबाइल से अटेंड कर सकते थे. तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारा मोबाइल होगा तो ही तुम अटेंड कर सकते हो. Remember, we need mobile not because we really need it. We need it because everyone has it, so I should also have it. Remember, आपका सबसे पहला इनिशियल मोबाइल बहुत ही बेसिक होगा, लेकिन जब आपको अपने मोबाइल का अपडेट करवाना था, कोई अच्छा मोबाइल खरीदना था, याद करो आपने पेरेंट्स को क्या बोला था? Did you say I wanted? No, you all said मेरे सारे फ्रेंड्स के पास ये है, इसीलिए मुझे अच्छा वाला मोबाइल चाहिए. You never said I wanted, so give me. Most of the time the way we convince our parents is सबके पास इतना अच्छा मोबाइल है, तो मेरे पास भी होना चाहिए. What is this? सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए. Is a demonstration effect. And this demonstration effect में even if the price is high, the demand is high. Now, I think someone over here has written that we can meet our old friends. I think so. Anushka has written, yes. Anushka ने लिखा था that we can meet our old friends. Yeah. लेकिन
नो व्हेन वी वर इन कॉलेज हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन था। वो लैंडलाइन का भी बिल अगर 300-400 रुपए के आगे चला जाए तो पापा घर में पूरा हंगामा कर देते थे। आज सोचो, आज लैंडलाइंस तो मोस्ट ऑफ द घरों से जा चुकी है, लेकिन आज मम्मी डैडी बच्चे दादा दादी सब नाना नानी सबके पास मोबाइल आ गया। आज हम लोग टेलीकम्युनिकेशन पे एक्सपेंडिचर्स भी कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली नाउ द टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर हैज कम डाउन, लेकिन मोबाइल्स का हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। वी आर रेडी टू स्पेंड सो मच ऑन टेलीकम्युनिकेशन इवन इफ द प्राइस इज हाई, द डिमांड इज स्टिल इंक्रीजिंग and hence we say demonstration effect, that is the imitation effect, leads to higher price, and even though the price is high the demand goes up, right? Next is habitual goods. Habitual goods, for example cigarettes. Cigarettes is a habituated commodity. Even if cigarettes की प्राइस बढ़ जाती है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, even if cigarettes की प्राइस बढ़ जाती है, क्या लोग सिगरेट पीना छोड़ देते हैं? Not at all. Even if the price is high, the demand is high because it is a habituated good. समझ लीजिए, many of us we like पानी पूरी। अगर आप कहीं पानी पूरी खा रहे हो जहाँ पर लेट से वो 15 रुपए प्लेट है, और अगर वो 20 रुपए प्लेट हो जाती है या 25 रुपए प्लेट हो जाती है, तो क्या हम सब लोग पानी पूरी खाना छोड़ देंगे? Of course not. Of course not. That is something we are habituated to. कुछ ही दिनों में हमें वो चाट खाने की इच्छा होती है, and hence in case of habituated goods, even if the price is high, the demand is also high, and hence habitual good becomes an exception to the law of demand. Immediately write down these 8 exceptions so that I will move to the next topic. Do you know that there is a one or two video uploaded daily on PALAVA TV, where a Palavian is helping many Palavians through some of the teaching or learning? That is because you have not yet subscribed to the channel. And if you have subscribed to the channel but you are still not getting this information, it's because you have missed out on one very small but a very important and significant. So let's see how to do that. First of all, if you have not subscribed, please hit the subscribe button here. Please note, as soon as you hit the subscribe button, there is a bell icon generated over here. The most important step that you missed is click the bell icon and turn it on all. Unless you do the notification bell icon settings, you are not going to get the daily updates. That's it. Now you will get all the live updates so that you can enjoy the live program at the same time. Please notice there is another new join button over here. Now, let's do the next topic, that is exceptional demand curve. Now, when I'm talking about exceptional demand curve, now this is the diagram. अब यहाँ पर देखिए, what is the difference between Giffin's paradox and exceptional demand curve? If you remember, Giffin's paradox was applied only in case of price fall. I repeat, Giffin's paradox was applied only in case of price fall. तो हमारा डायग्राम सिर्फ P1 का था, but as far as an exception
curve is concerned, तो इसमें price fall and price rise दोनों के बारे में हमको लिखना है. Giffen's paradox was only for price fall, but in case of exceptional demand curve, it is for price rise as well as price fall. Now, what is the explanation of the diagram? Listen carefully to the explanation. Price is plotted on y-axis, quantity demanded is plotted on x-axis. Demand curve DD is drawn with slopes upwards from left to right. आपका left and आपका right. So I repeat it again. Price is plotted on y-axis, quantity demanded is plotted on x-axis. Demand curve DD is drawn with slopes upwards from left to right, indicating direct relationship between price and quantity demanded. At original price OP, I'm talking about this. At original price OP, quantity demanded is, just a minute. So I'm talking about this point. At original price OP, quantity demanded is OQ. When the price rises from OP to OP2, quantity demanded rises from OQ to OQ2. When price falls from OP to OP1, quantity demanded also falls from OQ to OQ1, thus indicating direct relationship between price and quantity demanded. I'll repeat it once again for you, pay attention. Price is plotted on y-axis, quantity demanded is plotted on x-axis. Demand curve DD is drawn with slopes upwards from left to right, indicating direct relationship between price and quantity demanded. At original price OP, quantity demanded is OQ. When the price rises from OP to OP2, quantity demanded rises from OQ to OQ2. When price falls from OP to OP1, quantity demanded falls from OQ to OQ1, thus indicating direct relationship between price and quantity demanded. Is it clear? Draw the diagram and then I'll explain what is to be written in an 8 marks answer. Write it down fast. Draw the diagram first. Okay, do it a bit faster.
Did we write what is to be written in an 8 marks answer? Okay. So you know very well an 8 marks answer में क्या क्या लिखना है. तो law of demand में आप क्या क्या लिखेंगे? Law of demand में who gave the law in which book? Statement of the law, schedule and its explanation, and diagram and its explanation. I repeat, who gave the law in which book? Statement of the law, schedule and its explanation, diagram and its explanation. All this together carries 4 marks. The remaining 4 marks are for assumptions and exceptions. अब आपको यहाँ पर देखना है आपको क्वेश्चन क्या पूछा है. Suppose if they tell you state and explain law of demand with assumptions. Now since they have highlighted the term assumption, तो आप लोग assumptions को explain करेंगे and exceptions को mention करेंगे. But suppose if they tell you state and explain law of demand with exceptions, since exception को highlight किया हुआ है, you would be writing exceptions in detail and assumptions को सिर्फ mention करोगे. I hope the difference is clear. जब भी आप exceptions को explain करते हो, remember Gibbon's paradox is the most important exception और इसीलिए Gibbon's paradox का diagram आना बहुत जरूरी है. So now let me tell you what is the sequence of the answer. सबसे पहले आएगा who gave the law and in which book? Alfred Marshall in his book Principles of Economics. Second, statement of the law, which says the law of demand given by Alfred Marshall in his book Principles of Economics. याद है हमने पूरा statement किया था, so you would be writing that. उसके बाद schedule and its explanation, diagram and its explanation, assumptions को mention, exceptions को explain, and last में exceptional demand curve आप draw करेंगे. I repeat, you will draw the exceptional demand curve, उसको explain नहीं करना है. If you are able to include all these points, तो 8 marks में से आपको 7.5 marks या 7 marks तो confirm मिलेंगे. Is it clear? So you can easily score 7.5 marks if you include all these points. So I hope exceptional demand curve is clear, right? And you are clear about what to write in an answer. Now let us start with types of demand. Types of demand will be asked for 4 marks in your exam और ये question बहुत बार पूछा जाता है. Types of demand. So obviously जैसे कि हर आंसर में इंट्रोडक्शन की जरूरत है. If they ask you types of demand, then you need to write down the definition of demand. What is the definition of demand? Demand is the amount of goods and services which a buyer is willing to and able to buy at a given price and at a given time. Okay, now let us see what are the types of demand. The first is composite demand. Composite demand means when one commodity can satisfy your various demands. Such a demand is called as your composite demand. I repeat, when one commodity can satisfy many demands, it is called as composite demand. Could you give me an example of it? Okay, I'll first give you an example. Let's say for example electricity. एक electricity हमारे बहुत सारे demands को satisfy करती है. Like electricity is used in tube lights, it is used in fans, it is used in air conditioners, music systems, it is used in microwave, washing machines. एक electricity हमारे अलग अलग जगहों पर यूज होती है. Such a demand is called as composite demand. Coal, for example. Coal is used by a scientist for experimentation. It is used by a housewife for cooking. कोल की इंजन होती है. कोल का हम लोग चारकोल पेंटिंग करते हैं. फूड को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोल को यूज किया जाता है. फैक्ट्रीज में कोल को यूज किया जाता है. सो एक कमोडिटी जब अलग अलग जगहों पर यूज होती है, we call it as composite demand. अनुष्का, you have written water. Water in a way अगर composite demand देखा जाए तो सही है, but water का एक
इकोनॉमिक गुड. If you remember, हमने utility analysis में किया था that water is basically a free good. Nature provides us water free of cost. So, because water is a free good, we actually generally do not use it in economics के example में. वैसे example perfectly right है, लेकिन avoid writing water. You could give me some other example, any one of you? एक commodity जो अलग अलग जगहों पर use होती है. Can anyone try? Yes, very good. Wood. Wood is an example. Wood can be used for making benches. It can be used for making a table, a chair, maybe a door, bed, dressing table. एक wood अलग अलग जगहों पर यूज हो रहा है. Such a demand is called as composite demand. Then the second is, yeah, cotton. Yes, I got one more answer. Cotton. Yes, cotton can also be said to be a composite demand. क्योंकि cotton can be used for cotton cloth. It can be used for medicinal purposes. It can be used in parlors. It can be used in any number of places. So yes, cotton can be a good example. Next is joint or complementary demand. When two or more commodities are demanded simultaneously to satisfy one want, it is called as joint or complementary demand. I repeat, when two or more commodities are demanded simultaneously to satisfy one want, then that is called as joint or complementary demand. For example, bread and butter, two things demanded simultaneously. Car and petrol, two things demanded simultaneously. Lock and key, two things demanded simultaneously. Toothbrush and toothpaste, two things demanded simultaneously. Mobile and a charger, demanded simultaneously, are joint or complementary demand. Fatafat, give me some examples where two or more commodities are demanded simultaneously to satisfy one want. कोई एग्जाम्पल दो जल्दी से जहां पर टू और मोर कमोडिटीज आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली. Shoes and socks. Yes, very good. Shoes and socks, book and pen, और Shirt and pant. हाँ, कार एंड पेट्रोल में नहीं बोला बाबा, मेरा एग्जाम्पल मत दो, नया एग्जाम्पल चाहिए. बहुत सारे हैं, बहुत सारे. थिंक अबाउट इट. Yes, think fast, think fast. When two or more commodities are demanded simultaneously. Sugar, tea and milk. Yeah, sugar, coffee and milk. Right, two or more commodities demanded simultaneously. Vada pav, bhaji, chapati, varan, bhat. What? All these are examples of joint or complementary demand. Next is competitive demand. Yes, Anushka, tea and sugar is right. Next is competitive demand. एक चीज का डिमांड बढ़ने से अगर दूसरी चीज का डिमांड कम हो जाता है, then that is called as competitive demand. In simple words, I can say that the demand between substitutes is competitive demand. अगर थम्स अप का डिमांड बढ़ जाता है तो इसका मतलब है पेप्सी का डिमांड कम होने वाला है. एक चीज का डिमांड बढ़ने से अगर दूसरी चीज का डिमांड कम हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव डिमांड. Could you give me an example? Any example? एक चीज का डिमांड बढ़ने से दूसरी चीज का डिमांड कम हो जाता है. Yes, very good. Jio and Airtel. Very right. एक का डिमांड बढ़ा, मैं नाम नहीं लूंगी, तो दूसरे का डिमांड कम हो जाता है. और कोई एग्जाम्पल? अरे बहुत सारे हैं. प्लीज आप मोबाइल के एग्जाम्पल, मोबाइल सर्विसेज से बाहर निकलो. और क्या हो सकता है? दो चीजों का डिमांड जो कॉम्पिटिटिव होगा.
each other. लेकिन कॉम्पिटेटिव डिमांड में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज नाउ आई हैव अ पेट्रोल कार. सो मैं जब पेट्रोल पंप में जाती हूँ तो ऐसा नहीं पूछते पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का क्या है, अच्छा डीजल सस्ता है चल डीजल डाल दे. फॉर मी पेट्रोल एंड डीजल वर सब्स्टिट्यूट्स व्हेन आई वाज परचेसिंग माय कार. कार खरीदते वक्त मुझे डिसाइड करना था पेट्रोल खरीदना है कि डीजल, लेकिन आज मेरे लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. मेरी पेट्रोल कार है, मैं उसमें डीजल नहीं डाल सकती, तो वो एक्यूरेट कॉम्पिटिटिव डिमांड नहीं हो सकता. एनी अदर सब्स्टिट्यूट्स का डिमांड? कोई और सब्स्टिट्यूट्स का डिमांड? यस, टी एंड कॉफी, राइट. और अरे जब अपने एक्सपीरिया में जाते हो तो उस वक्त मैकडीज में जाना है या बर्गर किंग में जाना है, ये या सबवे में जाना है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव डिमांड है ना. तो इफ यू फील नहीं यार आज मुझे सबवे जाना है तो मैकडीज को छोड़ रहे हो, मैकडीज जाना है तो सबवे को छोड़ रहे हो, so that becomes a competitive demand. Yes, Pizza Hut and Domino's is a very good example, right? That's a substitute. So the demand is competitive demand. पहले अपने यहाँ पर हम लोग पिज्जा हट जाते थे, लेकिन जब से डोमिनोज स्टार्ट हुआ है पूरा क्राउड डोमिनोज में शिफ्ट हुआ. डोमिनोज का डिमांड बढ़ा लेकिन पिज्जा हट का डिमांड कम हुआ. एक चीज का डिमांड बढ़ाने से अगर दूसरी चीज का डिमांड कम होता है. यस अदिति, यू आर राइट. सीसीडी एंड स्टारबक्स, वेरी राइट. एक चीज का डिमांड बढ़ने से दूसरी चीज का अगर डिमांड कम हो रहा है, so that is called as competitive demand. The next is direct demand. In fact, direct and derived demand are connected to each other. What is direct demand? When I buy a commodity and it satisfies my demand directly, it is called as direct demand. And derived demand matlab, okay, let me put you a simple example. Assume if I go in a restaurant and order for a masala dosa. मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मसाला डोसा मेरे सामने आ रहा है और मैं कंज्यूम कर रही हूँ. That is my direct demand. I ordered, I got and I consumed is my direct demand. What is a derived demand? मेरा मसाला डोसा बनाने के लिए वो होटल वाले ने क्या क्या डिमांड किया? बोलो. मेरा मसाला डोसा बनाने के लिए वो होटल वाले ने क्या क्या डिमांड किया, क्या क्या मांगा होगा मेरा मसाला डोसा बनाने के लिए? यस, पुट इट इन द चैट. ओके, मसाला, राइट. और राइस, यस. he demanded rice, he demanded उड़द दाल और वेजिटेबल्स. चलो भाई, मसाला डोसा सब लोग खाते हैं, फटाफट बोलो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. वेजिटेबल्स एंड दाल, राइट. तवा, वेरी गुड. पोटैटोस, ओके. गैस, वेरी गुड. और बाकी बच्चे मसाला डोसा खाते नहीं है क्या? प्लेट. दे डिमांड ऑयल, कोकोनट, मिक्सर ग्राइंडर चटनी बनाने के लिए. नाउ ये जो तवा, गैस, कढ़ाई, पतीला, मसाले, राइस, वेजिटेबल, दाल, कोकोनट, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, कड़ी पत्ता, ये सारी चीजें जो होटल वाला डिमांड कर रहा है वो खुद के लिए नहीं, मेरे मसाला डोसा के लिए डिमांड कर रहा है. You go in a restaurant and order for masala, that's your direct demand. लेकिन वो मसाला डोसा बनाने के लिए होटल वाला जो तवा, कढ़ाई, गैस डिमांड कर रहा है वो सब इनडायरेक्टली मेरे डोसे के लिए कर रहा है ना. The demand is done by the hotel wala, but he is demanding those things for my masala dosa. So that becomes your indirect demand, and indirect demand is nothing but your derived demand. So masala dosa is a direct demand, but बनाने के लिए होटल वाला जो जो चीजें डिमांड करता है that becomes your derived demand. I hope I'm clear with direct and derived demand, right? Then the next is individual and market demand. ये हमने लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में किया था. Assume that मेरी शुगर की शॉप है और आज ओपनिंग पे आप सबको इनवाइट किया है. आप सबके हाथ में मैंने एक पीस ऑफ पेपर दिया है और उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा है कि 10, 20, 30, 40, 50.
और आपको बताना है 10, 20, 30, 40, 50 के लिए आप कितनी शुगर डिमांड करेंगे। याद है हमने एग्जांपल लिया था कि आप सब उस पीस ऑफ पेपर पर लिखते हो कि 10, 20, 30, 40, 50 प्राइजेस पर आप कितनी शुगर डिमांड करोगे। आई रिमेम्बर हमने एग्जांपल में कहा था अज्यूम दैट आप सबके पेपर में से मैंने अदिति का पेपर उठाया, तो अदिति के पेपर पे 10, 20, 30, 40, 50 पे अदिति कितना डिमांड करेगी ये लिखा है एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर मैं आप सबके डिमांड्स को ऐड करती हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। एक ही का डिमांड लिया तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगा, सबके डिमांड्स को अगर हमने ऐड किया तो दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट। So immediately write down types of demand first. It's a very important answer. कई बार एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। So you have to write the definition of demand and then you have to write down these types of demand. आज मैंने आप सबको नोट्स का ये चैप्टर डिमांड चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ भेजा है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। आपको पता है इस साल का सिलेबस चेंज हुआ है, तो लास्ट मैंने आपको डीएमयू सेकंड चैप्टर 2 का नोट्स भेजा था, आज मैंने आप सबको डिमांड का नोट्स भेजा हुआ है। ओके, so you will study your entire law of demand, determinants of demand and types of demand from this chapter, from these notes that I have sent you. क्या आप जानते हैं जब से लॉकडाउन शुरू है पलावा टीवी पर रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड होते हैं जिसमें कोई ना कोई पलावियन सारे पलावियंस की कुछ ना कुछ सिखाकर बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो वो इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है बट फिर भी आपको ऑटो अलर्ट्स नहीं आ रहे और आप ये जानकारी नहीं है, Any one of you can unmute yourself and answer. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, why does the demand curve slope downwards? Think, why does the demand curve slope downwards? क्या हो सकता है आपके हिसाब से इसका आंसर? Anyone? कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, why does the demand curve slope downwards? Yes? Anyone? You can unmute and answer. Guess मारो। हम सब लोग जानते हैं कि yes, when we draw the demand curve, we know very well that the demand curve slopes downwards. Why do you think ऐसा होता है? क्यों demand curve is sloping downwards? डिमांड लेस है कमोडिटी का इसके लिए। Because when price rises, demand comes down. So I think so. You're trying to tell me, Aditi, that when price rises, demand falls, and when price falls, demand rises. Is it the right? Is it what everyone is trying to tell? Right? Okay. Now pay attention to what I'm saying. Okay. So now
If they have asked you, why does the demand curve slope downwards? So, majority of the students, almost I can tell you 90% of the students say that because price rises, demand falls, and price falls, demand rises. 90 to 95% of the students give this answer. Why does the demand curve slope downwards? Because of this. Absolutely wrong. बच्चे यहाँ तक करते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो शेड्यूल निकालते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड पूरा लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उनको पूरा रॉन्ग देके 0 मार्क्स दिया जाता है. So what does it mean by why does the demand curve slope downwards? Listen now. When they ask you this question, why does the demand curve slope downwards? It means they are asking you, why is it that when price rises, demand falls, and when price falls, demand rises? I repeat, when they are asking you, why does the demand curve slope downwards, it means they are asking you कि क्यों प्राइस राइज होने पर डिमांड फॉल हो रहा है एंड प्राइस फॉल होने पर डिमांड राइज हो रहा है. हेंस ये पार्ट इसका आंसर नहीं है. इट इज जस्ट दैट वी आर पुटिंग द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट वर्ड्स. So this is not the answer. It is just that we are putting the question into different words. Why does the demand curve slope downwards? There are 5 major reasons for it, which we will do in the next lecture. Is it clear? All of you? The question, why does the demand curve slope downwards, is a very, very, very important question. आंसर गलती से भी वो नहीं लिखना जो आपने कहा है, the demand curve slopes downwards because price rises, demand falls, and price falls, demand rises. No, the demand curve slopes downwards because there are 5 different reasons for it. And यही 5 reasons आपको एग्जाम में लिखने हैं. क्या है वो 5 reasons? We will study in the next lecture. Till then, आप सबको जो मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, प्लीज गो थ्रू दोज नोट्स. डिमांड चैप्टर के वो नोट्स है, प्लीज गो थ्रू देम. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स एंड हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्टिंक्शंस बिटवीन द वेरियस कांसेप्ट्स करेंगे एज फार एज द डिमांड चैप्टर इज कंसर्न. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टिंक्शंस करने वाले हैं. सो ऑल ऑफ यू कीप your pens and your pencils and scales ready because these distinctions are going to be diagrammatic distinctions. Is it clear? So we will stop for today. If you have any doubts या बाद में notes पढ़ते वक्त कुछ होता है तो you can pin me. Okay? So see you. You are watching PALAVA TV. PALAVA TV. And you are watching PALAVA TV. Please like, share and subscribe. I would like to thank PALAVA TV for covering it. We are very much thankful to PALAVA TV. Thanks to PALAVA TV. Thanks to PALAVA TV for covering it. PALAVA TV. Thanks for watching us on PALAVA TV. You are watching PALAVA TV. 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 Yo. PALAVA TV. PALAVA TV. PALAVA TV. आप देख रहे हैं पलाव टीवी लाइव. PALAVA TV. PALAVA TV. PALAVA TV. PALAVA TV. Yo. PALAVA TV. We love to see the PALAVA TV. I request everybody to share, see, watch and enjoy the PALAVA TV. Do you know that there is a 1 or 2 video uploaded daily on PALAVA TV where a Palavian is helping many Palavians through some or the other teaching or learning?
That is because you have not yet subscribed to the channel. And if you have subscribed to the channel but you are still not getting this information, it's because you have missed out on one very small but a very important and significant step. So let's see how to do that. First of all, if you have not subscribed, please hit this subscribe button here. Please note, as soon as you hit the subscribe button, there is a bell icon generated over here. The most important step that you have missed is click the bell icon and turn it on all. Unless you do the notification bell icon all settings, you are not going to get the daily updates. That's it. Now you will get all the live updates so that you can enjoy the live program at the same time. Please notice there is another new join button over here. This button is for the PALAVA TV membership program, wherein you can enjoy bonus contents. So we click on this join and you will see the various information on the page where you can enjoy exclusive and bonus content. Thank you.